Evening, everyone. We'll just wait for 1 or 2 minutes so that everybody will join. I hope my voice is audible to everyone. Good evening, everyone. So, good evening, everyone. I, Pooja Vora, welcome you all to yet another exciting webinar session on Python. Today, we are going to unlock the power of coding using the Python programming language. And today we are having the second session of Python. So, in the previous class, we have learned that Python is a very powerful and very simple language in which we have understood what do you mean by the programming language, and we have introduced ourselves to the Python programs, few Python platforms that we can use for creating the programs. Then we have learned some key features that it's a very beginners friendly Python language, object oriented, very functional programming, and has thousands of libraries available. It is very portable and open source and has a strong community that most importantly, it read almost like English. We have learned that the readability of this language is very good, that we can read the Python programs very easily and make us understand what's going on in that program. So let's start with today's class. So the very first thing that we are going to do is recap of the previous session that we have learned. So can you just write it down in chat what we have done in Python yesterday? Quickly. Yes, Manan is saying that we have learned about variables. Babita is saying we have learned about coding. Manan is saying that Jupyter language programming. Arohi is saying basic programming. Mansavi is saying that they have learned coding, syntax. Nitya is saying Jupyter programming. Operations, Manan is saying. Membership tags, yes. So we have learned a lot of things in the Python, and basically we have started with the operators. Earlier we have seen that syntax is very much important. If we will not follow the syntax properly, strictly we will not follow the syntax properly, the compiler or the interpreter will throw error to us. They will show that there is a bug in the program. Even a full stop mistake or even a bracket mistake is a big mistake in program, and they will not run the program properly. The compiler will tell us that there is an error. If suppose I'm using a print command, and if I'll write print with capital P, again, it's not a valid keyword. So they will not accept it. The compiler or the interpreter, whatever will be the working condition, it will throw error to us that this is not a complete program. Fine. So this is the thing that we have learned, and we have learned that we will download Anaconda Navigator, and through which we will launch the Jupyter Notebook. So I have already launched Jupyter Notebook. So in the previous class, we have basically learned about two types of operator. One was arithmetic operator and the another was comparison operator. So let's take a program of arithmetic operator so that we can revise what we have learned in the previous class. So the very first statement, A is equals to, right now I'm not using float here, I'll use first int here, and then we'll proceed further. Okay, what do you mean by the first line here? What's going on in the first line? Write it down in the chat quickly. In the first line itself, if I'm saying A is equals to int input, enter first number. So what type of statement is this? Okay, Babita is saying we have two numbers. This is input statement in which, yes, Avni is correct. This is input statement in which we are converting the input given by the user into an integer.
That's why we have taken int as integer. Fine. So we have taken this. Just excuse me. Okay. So this is int is used to create whatever the number person is giving to convert it into integer. Otherwise, if I will use only the input statement, it will convert the user input into string value. Fine. Okay. So A is equals to input is the first number, then B number is there. And then we are asking them to print addition A plus B, print subtraction A minus B, then print multiplication A into B, print division A divided by B. So we are performing all the functions here by taking the number. So let's run this program. Okay, so it's already asking for the first number. So I'm entering the first number as 150. And then I'm entering the number as second number as suppose 100. So it is going to perform the action for me. I'll press the enter again. So they are providing me with the answer that addition 250, subtraction is 50, multiplication is this, division is this, and floor division is this. Fine. Suppose now if I want some number in decimals, ठीक है ना, ये चीज आपको बताया कि आपको अगर मुझे डेसिमल में कोई नंबर देना है तो हम इसमें क्या करेंगे. आई रन द प्रोग्राम अगेन. अब मैं यहाँ पर अगर डेसिमल में नंबर देती हूँ 152.36. इफ आई यूज दिस नंबर एंड प्रेस एंटर, दे विल थ्रो एन एरर टू मी. ठीक है, क्या एरर आ रहा है मेरे पास कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट with base 10. The number which I am giving 152.36, it is not an invalid literal for int because integer will take only the integer values. And if I have to take a decimal values, in that case, the keyword used instead of int is float. तो यहाँ पर हम int की जगह क्या use करेंगे? Float. If I am using a float number here, तो फ्लोट नंबर में हमारा क्या आ जाता है, हमारे डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं. ठीक है, सो आई रन द प्रोग्राम अगेन एंड नाउ इट विल नॉट थ्रो एनी एरर टू मी. आई विल यूज अ डेसिमल नंबर लाइक 158.63. सी, नाउ आई एम नॉट गेटिंग एरर. ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर एक और नंबर ले लिया, सपोज 45.63. सो नाउ आई विल परफॉर्म द and it will perform the calculations for me. So if I'm taking any number which has no decimals, I will take integer. But if suppose I want to perform a calculation using some decimal numbers, I will use float word here. Okay, this is a new thing that we have learned today. Okay, next we have learned about the comparison operator, that if we have to compare two numbers. So here I have a x and y value. Again, this is a user input. So x and y value जब हमें यहाँ पर मिलेगी तो हम x और y को compare करेंगे. Either both the numbers are similar to each other, they are same or not, or they are different, or they are greater than or less than with each other. Fine. So let's redo this. I'll select this and click on. So I'm giving a number x as 85 and y as 98. Now you guess what will be the first answer. Is x is equal to y? So the answer will be no, they are not. So it will come as false. Fine. So the first value I will get as a false. Okay, second, x not equal to y. So what will be the next value? Yes, it comes out to be true. Then x greater than y. X is greater than y? Yes. Is it true? No, it's not true. X is smaller than y. So my answer will come as false. So third answer will come as false. Then the fourth one, it comes out to be
true. It comes out to be true. Yes, x is less than y. So let's see. I'm pressing the enter. Yes. So the first value is coming false because the numbers are not same. True, false and true. Let's try with the same number. ठीक है, एक बार same number से try करते हैं. So I'm writing 85 and 85. Now see, x and y are equal. So I'm getting true as an answer. They are not equal, तो false आएगा. x is greater than y, false. x is less than y, false. क्योंकि ना x बड़ा है ना y बड़ा है, वो दोनों बराबर है. ठीक है, fine. So this is the way we have revised what we have learned in the previous class. We have learned about two things, two main basic operators, arithmetic operators and comparison operator. And in today's class, we are moving towards the next type of operator, that is logical operators. Now comes the logical operators. Logical operators, we have basically three types of logical operators. ठीक है, three types of logical operators are like and, or and not, which help us to build complex conditions. Now condition is not that ki x is greater than or y or not, or they are equal to or not, they are equal to or less than or not. वो बहुत simple हो जाएंगे. But अब हमें logical operators लगाना है जहां पर हमारी थोड़ा सा complex हो जाएगा situation. Complex कैसे होगा कि now we have to compare two things. Fine. And, or not. And में हम दो conditions को true करेंगे. अगर दोनों condition true होंगी, only then the condition will be true. और में true if one of the statement is true. कोई एक भी statement true हो जाएगी तो भी हमारा program run करेगा, वो statement true हो जाएगी. Not will be the reverse situation. ठीक है, not will be the reverse situation. These operators return true or false and are essential for decision making in coding. बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इनके बिना आपके जितने भी, जैसे आप रोबोट्स को जब आप कोडिंग करते हो, जहां पर भी इफ एल्स सिचुएशन आती है कि ये हो तो ये करना, ये हो तो ये करना. सपोज यू आर गिविंग एन ऑर्डर टू रोबोट कि गो टू द नेक्स्ट रूम एंड ब्रिंग एप्पल एंड बनाना. तो इफ यू आर टेलिंग देम एप्पल एंड बनाना, सो द वर्क विल बी कंप्लीटेड ओनली व्हेन ही विल ब्रिंग बनाना एंड एप्पल बोथ. फाइन. एंड अगर आपके में वो एप्पल ले आएगा तो ही विल बी इन अ इनकम्प्लीट सिचुएशन कि मुझे एप्पल और बनाना दोनों लाने के लिए बोले थे, लेकिन मैं सिर्फ एप्पल ही ला पाया, मैं बनाना नहीं ला पाया, तो द स्टेटमेंट विल नॉट बी कंप्लीटेड एट दैट टाइम. ठीक है, लेट्स मूव टू अ सिंपल एग्जांपल. एक छोटा सा लाइफ डेली लाइफ का एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज को. एग्जाम्पल लेते हैं हम एक स्कूल का. Like getting ready for school. Scenario क्या है? You are deciding whether you go out or play after school. So you are using the and operator. And में दोनों condition satisfy होनी चाहिए. I will go out to play if I finish my homework and clean my room. So both the condition must be satisfied कि आप दोनों चीजें clear करोगे, आप अपना homework भी finish करोगे और आप अपना room भी clean करोगे. Only then you will go out. Otherwise, you will not go out. You cannot go out only if both the conditions are true. So homework is finished, tick. Room is clean, tick. If either is not done, you can't go out. So this is the situation of and. And में दोनों ही condition होंगी तभी satisfaction होगी. Now comes to the or condition. Using the or operator. अब or operator में क्या हो जाता है? Just a minute. Or operator में using the or operator, I will get a chocolate if it's my birthday or I score well in the test. So both the condition, अगर दोनों में से कोई एक भी condition आ जाती है, either it's your birthday, you will get a chocolate, or I score well in test, you will get the chocolate. So you get chocolate if at least one of the condition is true. So that is the condition of or. जितना डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ लर्न करोगे, समझोगे, उतना ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी. अदरवाइज बच्चे कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर इज वेरी मच डिफिकल्ट, कहाँ एंड लगना है, कहाँ और लगना है, कहाँ नॉट एंड लगना है, यू विल फेस प्रॉब्लम. लेकिन उसको बिल्कुल अपने लेवल पर लेकर आओ, एक छोटा सा सिनेरियो अपने दिमाग में लाओ, उसको सोचो एंड यू विल गेट द आंसर वेरी क्विकली. ठीक है ना. नाउ द नेक्स्ट इज यूजिंग द नॉट ऑपरेटर. आई विल नॉट वॉच टीवी if I do not complete my homework.
So this is a not condition. The not flips the condition. If homework is not done, no TV. So that is a not operator. Got my point? So by using these operators, I can create my programs. Okay, let's take a simple example in the coding. Then it will be more clear to you. Where is my cell? Okay, I'm bringing the cell up. I can change the position of the cell. So it is coming on the top now. I'll increase the size so that you will be able to see it properly. ठीक है, तो यहाँ पर एक condition लिखते हैं. ठीक है. For example, if I'll say print x, 10 is greater than 5 and 15 greater than 5. ठीक है. So tell me क्या आंसर आएगा इसका. Print 10 greater than 5 and 15 greater than 5. Both the conditions, we have to check both the conditions, and between it is and. Yes, I'm getting the answer as true because दोनों ही condition satisfy हो रही हैं. 10 भी 5 से बड़ा है और 15 भी 5 से बड़ा है. तो the condition is true. Let me check. Yes, the condition is coming true. Okay. Now I'm making a little change here. Now tell me, what will be the answer? Yes, I'm getting the answer correct from all the students. It is coming false. Why? Because first condition तो satisfy हो रही है कि 10 5 से बड़ा है, लेकिन second condition satisfy नहीं हो रही. I'm making a little bit more change here. Now instead of and, I'm using or. Now tell me what will be the answer. Yes, it will come true क्योंकि एक तो condition satisfy हो रही है ना, एक तो condition हमारी correct है, तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? True. फाइन. जब हम आगे जाके बहुत लॉजिकल प्रोग्राम्स के साथ काम करेंगे, वहां पर हमारा ये एंड और नॉट चीजें जो है वो यूज होंगी, जहां पर हमारी ये कंडीशंस लगेंगी. ठीक है. सो आई होप लॉजिकल ऑपरेटर इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और कंस्ट्रक्ट्स. अब क्या होता है? द कंट्रोल स्टेटमेंट्स डिसाइड्स द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो. What will be the flow of my program? Like for example, if I'll take an example of this program. So what is the flow of this program from top to bottom? First, this line will execute, then I'll press enter, then this line will be executed after the first line, then next. So from top to down, this type of situation is sequential statements. कि 1 by 1 उसके एक्शन लिया जाएगा. These are the sequential statement. But in real life situation हर बार ऐसा नहीं होता है ना. Sequential ही हमेशा प्रोग्राम नहीं होगा. Sometimes we have to change the control of the program to somewhere else. For example, if suppose मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, if A is greater than B, then multiply A with B. If A is less than B, add it. तो मुझे दोनों ही कंडीशंस आ गई मेरे पास. अब कुछ सिचुएशन में A बड़ा होगा और कुछ सिचुएशन में B बड़ा होगा. ठीक है. तो इन दैट केस आई हैव टू मूव माय कंट्रोल टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ सिचुएशन. आई हैव टू शिफ्ट माय कंट्रोल फ्रॉम वन लाइन टू अनदर. वहां पर हमारी सीक्वेंस में चीजें नहीं चलेंगी. सो इन दैट केस हमारे पास क्या आ जाती है? सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं जो कि सीक्वेंस में चलती हैं. फिर हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट आते हैं एंड दीज अलाउस टू मेक डिसीजंस, जहां पर हमें डिसीजंस बनाने हैं. पाइथन चेक्स अ कंडीशन एंड चूज अ पाथ, दैट व्हिच पाथ आई हैव टू टेक. सो देयर कम्स द कंडीशनल स्टेटमेंट्स. सो लेट्स मूव टू द PowerPoint presentation. So we have conditional statements, we have sequential statements, we have iterative statements. So these are the three things that we have, and in today's class we will be discussing about the conditional statements. Sequential statements we have already discussed. जो sequence में चल रही है one after one, which the example we have already seen. So that is the example of sequential statement, जिसमें कहीं भी कोई change नहीं होना, top to bottom
सिचुएशन चलती जाएगी. But in today's session, we will be learning about the sequential statement, sorry, conditional statements कि कहाँ से condition, क्या condition होगी और हमारी statement कहाँ से कहाँ जाएगी. ठीक है? So control statement enable us to specify the order in which the various instruction in the program are to be executed. Fine. Next, sequential statement we have already learned. Just go through it. It's a generic term for an ordered list set. There are several types of sequence in Python, and these are the sequencing that goes on. Now comes the conditional statement. Conditional statements allow us to make decisions. The very first important thing. Decision control statement भी बोलते हैं इसलिए इसको. Conditional statements define the different course of action under different situation. अभी हमने कंडीशन देखी ना, एंड और नॉट वाली, वो भी कंडीशन थी कि अगर आप काम करोगे तो आप जाओगे, आप नहीं काम करोगे तो नहीं जाओगे. ठीक है. सो बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन, अगेन जो भी लॉजिकल चेकिंग होगी उस पे हमारे कंट्रोल्स जो हैं स्टेटमेंट्स पे जाएंगे. देन वी हैव three types of statements here. If statement, if else statement, if elif else statement. So पहले हम if statement से बात करते हैं. if statement क्या होती है? जब हम नॉर्मली इंग्लिश में बोलते हैं तो if statement की जगह हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है. ठीक है. तो इसी की एक एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद सोचते हैं. Now I know you people are very good in English, so write a statement using if. कोई भी स्टेटमेंट लिखो, any statement which starts with if. If I were a bird, I would like, if you go out, be careful. If I got gift, if it's my birthday, I would get a watch. If you want to achieve success, work hard. Okay. If I play, then you study. If you want your box, come here. If you were on a plane, be happy. If my age is 18, I can drive a car. Very good. If I play, then you study. If I go outside, then I should be careful. So see, अगर आप कुछ भी I if से use कर रहे हो तो you are giving a condition. है ना? आप कुछ भी I if से use कर रहे हो तो आप एक condition को use कर रहे हो. Yes or no? ठीक है. तो else, अगर else की बात की जाए तो else क्या करता है? वो दूसरा तरीका बता देता है. If I will study, I will get good marks. Else, I will not get good marks. Else means दूसरी कंडीशन, क्योंकि जब भी कोई if कंडीशन आएगी, there will be two answers to that. Either the condition will be true, either the condition will be false. So true की कंडीशन में अलग एक्शन परफॉर्म किए जाएंगे और false की कंडीशन में अलग एक्शन परफॉर्म किए जाएंगे. ठीक है. तो let's see the same thing in the coding itself. ठीक है. इसी को हम चीज को कोडिंग में देखते हैं कि कोडिंग में हमारे पाइथन कोडिंग में ये कैसे हेल्प करेगी. Okay, I'll take a fresh coding page. See. So हमारा पहला फंक्शन क्या होगा? हम दो नंबर लेते हैं. ठीक है. We'll take two numbers and we'll compare them. Which one is greater and which one is smaller. So if I have to create a program of finding the numbers, which number is greater, so how will I do it? So first I will take the input number. So I'll write first underscore number. So this is my variable name equal to, then I'll use int. In bracket, I will write input. Then I'll start the bracket and inverted comma. I will write enter the first number. Okay. Now I'm copy down this for the second number. It will save my time. Okay. So I'll make this. I have to close the bracket again. Here I'm taking it as a second number, int input.
Why I'm getting it red? Because I forgot to put the colon sign here. Sorry. Okay. So first number, int input, enter the first number, and here I will write it down, the enter the second number. Now I will apply the if condition. So I'll write it down if. For that, I will write it down if. This is the syntax for writing it. So I'll write it down if. Now I'll write it down first underscore number is greater than second underscore number, and it will end with a colon sign. So if first number is greater than second number, then print first number is greater. ठीक है, अब देखो प्रिंट जो आया वो ऑटोमेटिकली इंडेंट होकर आया, थोड़ा सा आगे आया, है ना. फाइन, दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम कि इफ this condition will satisfied, so the statements which are under the if after the indent part, it will be executed. Otherwise if this condition is false, then move to the next line. तो इसीलिए हमारी इंडेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है. अगर हम इंडेंटेशन प्रॉपरली नहीं देंगे, इंडेंटेशन का मतलब होता है यहाँ पर कुछ लाइंस को लीव करना. बेसिकली यहाँ पर 4 स्टेप्स आगे जाता है ऑटोमेटिकली. देखो प्रिंट जो है वो आगे गया, अगर नहीं जाता तो आपको लेकर जाना है एक टैब प्रेस करके. ठीक है, इंडेंटेशन का मतलब होता है कि हम एक स्पेस दे रहे हैं. जैसे हम आप नॉर्मली पॉइंट्स लिखते हो, तो पॉइंट्स को अगर थोड़ा सा इंडेंट थोड़ा सा आगे करके लिख देते तो आपको पता चल जाता है कि ये स्टेटमेंट्स इस मेजर पॉइंट की हैं, इस बिग हेडिंग की ये छोटी पॉइंट्स हैं. तो ऐसे इंडेंटेशन में ये बता रहा है कि अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आपने ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, नेक्स्ट हम वापस लेकर जाएंगे इसको और हम यहाँ पर यूज करेंगे एल्स. अगर हम अभी सिर्फ इफ यूज करते हैं, बिकॉज दिस इज फर्स्ट आर इफ स्टेटमेंट. फाइन, सो अब यहाँ पर अगर हम इसको रन करें, so they will ask me a first number, so I am giving 89. Second number I am giving 45. ठीक है, so what will be the answer? Yes, my first number is greater than the second number. I will get the answer first number is greater. But in the next scenario, I will give 89 and 96. So nothing will happen. क्योंकि मैंने else condition तो दी ही नहीं है ना. मैंने तो यही बोला कि अगर फर्स्ट नंबर ग्रेटर है सेकंड नंबर से तो प्रिंट कर दो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर. बट अगर वैसा वैसा सिचुएशन हो जाती है, सो देयर इज नथिंग, कोई स्टेटमेंट मैंने दी ही नहीं, प्रोग्राम को कहाँ मूव करेगा, तो इट विल नॉट गिव मी एनी काइंड ऑफ आउटपुट. सो इन दैट केस, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इन दैट केस विल गो टू वन लेवल अप. विल बी यूजिंग इफ एंड एल्स बोथ. ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम एल्स स्टेटमेंट भी यूज करेंगे. तो एल्स, देन इट विल एंड विद द सेमीकोलन एंड वी विल से प्रिंट सेकेंड नंबर इज ग्रेटर. ठीक है, so let's see now my program will work or not with the 89 and 96. So yes, second number is greater. Now my work is working perfectly. Got my point? So we have learned two types of statement: if statement, if else statement. Now sometimes what happen, I have multiple lines available, multiple conditions available. Can you give me an example of a situation in which I have to judge for a multiple conditions? कोई सिचुएशन दो मुझे कि जहां मुझे बहुत सारी कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशंस में काम करना है, बहुत सारी सिचुएशंस को चेक करना है. गिव मी अ डेली लाइफ एग्जांपल. अभिनव, योर कोड इज फाइन. गिव मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन कि जहां पर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि आई हैव मल्टीपल कंडीशंस टू चेक. गिव मी अ रियल लाइफ एग्जांपल फॉर दैट. Here I have a situation just to compare two numbers. Which number is greater? So I have two numbers. But
a situation can arise where I have to check multiple conditions. Okay, someone is saying I need a chocolate ice cream, vanilla ice cream, butterscotch ice cream. Okay, you have a choice of ice creams. Comparing dresses. Okay, to check 5 numbers. Else, I can give you an example here. You can take an example here of your grading. Suppose आपके grades हैं, ठीक है ना? Grading का system कैसा होता है कि if you are getting from 90 to 91 to 100%, you will be getting a A grade. Then from 81 to 90, you will be getting a B grade. So in that, a computer has to check multiple conditions. So in that case, जहां आपके पास multiple conditions आ जाती हैं, वहां पर आपको क्या करना होता है? Yes, वहां पर आपको क्या करना पड़ता है? वहां पर आपको if और else काम नहीं करता कि either this or that. तो वहां पर हम लगाते हैं एलिफ. ठीक है, अब मुझे अगर यहाँ पर एलिफ लगाना है, एलिफ की सिचुएशन यहाँ पर क्या राइज होगी कि माइट बी द नंबर्स आर सेम. यहीं पर ही क्यों नहीं एग्जाम्पल दिया कि 2 नंबर सेम भी तो हो सकते हैं ना? अभी आपने 2 नंबर्स को कंपेयर किया. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पर 2 नंबर्स को सेम डालती हूँ. आई एम राइटिंग 89 एंड आई एम गिविंग 89. सेकेंड नंबर इज ग्रेटर. इज दैट अ करेक्ट आंसर? No, it's not a correct answer. My program is not giving me the correct values. So means there is some problem in my program. Program वैसे ठीक है, but रन टाइम एरर आ रहा है ना? एरर दे रहा है कि जब दोनों नंबर सेम हो जाएंगे तो एरर आ रहा है. तो आई हैव टू मेक अ कंडीशन हेयर कि अगर दोनों नंबर सेम हो तो मेरा प्रोग्राम उसको भी कंपेयर करे, है ना? उन दोनों चीजों को भी कंपेयर करे. ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है कि बोथ द नंबर्स आर सेम. सो अब यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर हम एक और कंडीशन लगा देंगे. ठीक है, यहां पर हम एक कंडीशन लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं एल एफ. एल एफ फाइन. और हम एल एफ में इसको ले जाएंगे ऊपर कि अगर ये हो तो ठीक है, सेकंड नंबर ग्रेटर होगा. और अगर फर्स्ट नंबर भी ग्रेटर नहीं है, सेकंड नंबर भी ग्रेटर नहीं है, तो क्या सिचुएशन हो सकती है? व्हाट विल बी माय सिचुएशन? कि बोथ द नंबर्स आर सेम. सो आई विल राइट इट डाउन. बोथ numbers are same. Let's see. Now my program will work or not properly or not. Oh, I got a syntax error. Okay. Syntax error इसलिए है कि हमें यहाँ पर पूछना पड़ेगा कि whether my second नंबर, हो सकता है सेकंड नंबर छोटा हो बड़ा हो, तो अब हम सेकंड नंबर पे पूछेंगे. फर्स्ट नंबर. ठीक है, लेट्स सी. Now I am getting an error. No, I'm not getting an error now. So I'll write 56 and 56. Yes, I'm getting the correct answer. Both numbers are same. So now my program is ready to check all the numbers. Whether they, I will both the values में हम same डाल दें, greater डाल दें, less डाल दें. So my program will work in all the conditions. Fine. Is that clear? So this is all about conditional statements, when to use if, when to use if else, and when to use if, elif, else. So if I have multiple types of questions, so in that case, I will use elif. Got my point? Okay? Okay. So these are the 3 types of conditional statements which we have discussed just now. If statement, if else statement, and if else if statement. Okay, let's move to the next thing. Okay, now guess the output. Now it's your turn. We have already done not in and in operator. एक revision भी हो जाएगी. तो not in and और not in वाला operator हमने कल करा था. ये वाला हमने beginning में revise नहीं करा. अब इसको revise करते हैं. Okay, the word is programming. So I am giving a word is an variable in which I am giving the programming. So print p in word. First का आंसर क्या होगा? Print p in word. Is p is available in my string? True. So the answer will come true.
print Z not in word. Z hai, it's not there. So true. Gram in word, true. Very good. So all the answer will come true. Very good कि आपको in or not an operator याद है. Very good. Very good. Fine. So my answer will be true, true, and true. Very good. Now guess the output. Age is equals to 18. If age is greater than or equal to 18, print you are an adult. Else print you are not an adult. So what will be the output? Quickly tell me the answer. Age is equals to 18. Age is greater than or equal to 18. You are an adult. Let me check the same program in the better notebook. Take a fresh one. Let's continue here. Okay. So move it. Okay, I'm increasing the size so that it will be useful to you. Okay, so everybody is giving the answer. So the answer will come as you are an adult because the age is 18. Okay. So in this program, it will check only for one value, 18. But if I want to make it interactive means now I want age from the user. User will take this software and will check whether you are an adult or not. So what change I will make to this program? बताओ क्या प्रोग्राम में चेंज करें? क्विकली अभी इतने सारे प्रोग्राम करे हैं हमने. Which statement I will use here to make this program interactive? Yes, Mansavi is saying input कि हम इसको input statement पर लेके जाएं. ठीक है, तो input statement पे कैसे लेके जाएंगे? Age हमारा वेरिएबल ही रहेगा. Now I will take int input. I will say enter your age. Got it? Now it will check the age given by the user. Okay, I have done a mistake here, so I have to close the bracket. This is called debugging. Now enter your age. Okay, give me a value of age. Which value I'll check for? Okay, the first one I'll get the 13. Okay, 13. Okay, something is pending. Let me check. See, sometimes you will get this problem. The cell has been executed to avoid this. So in that case, क्या आप करेंगे? यहाँ से कर्नल को बंद कर देंगे. माइट भी आपको पता ही नहीं कि कौन सा प्रोग्राम चल रहा है. इसको कैंसिल कर. See, still it is giving a problem. रीस्टार्ट कर लो. ठीक है, रीस्टार्ट करते हैं इसको. एंटर. Okay, 13. Now it is working. कर्नल रीस्टार्ट हो गया. You are not an adult. So at the age of 13, you are not an adult. Fine. Okay. Somebody is saying to check it for 41. Okay. So I'm checking it for 41. You are an adult. So now my program become an interactive now. It will not check only for the age of 18. It can check for any age that the user is going to input here. Okay, next. Now comes to find out the error. Okay, I copy down this program to my
here only. चलो अब मुझे बताओ इसमें क्या एरर है. Tell me the error in the program. Okay, somebody saying the input statement is missing, but I don't require input statement because temperature is equal to 18. I have already given a value here. So there is no need to input. I have already given an input to my program. Okay. So saying कि else में colon missing है. Very good. And print P will be small. Very good. Colon. ठीक है. Let's run the program. देखते हैं कोई error आता है हमारे पास. Okay, no error is coming. It is not hot outside because there is a 18 temperature. So two errors were there. Print ka P and else mein colon was missing. So that was the mistake in our program. Okay, let's see one more program of error. Okay, इसमें हमने थोड़ा सा और चेंज करा है. Bring it here. Okay, now tell me the errors. Let's go by line. If there is any error in the first line, first tell me if there is an error in the first line. Yes. What is the error? Colon. Very good. First line में error colon है, इसको ठीक करते हैं. Second line, is there any error? Tell me about the second line. Okay, there is no error. Very good. No error, so let's move. Is there any error in the third line? No. Very good. Any error in the fourth line? No. Any error in the fifth line? Yes. Else E will be small. Very good. You are identifying the problems. Okay. Then there is any problem in the last line? No. तो फिर I think our program will work fine. Run करें program को? Yes. Okay. I'm running the program. So the program is saying the weather is moderate. It is running fine. किस वेदर की बात हो रही है यहाँ पर? कोई हमने वेदर तो दिया ही नहीं है ना? एक बार इस प्रोग्राम को यहाँ पर कॉपी करते हैं एंड रन. सी नो आउटपुट. कोई आउटपुट नहीं दे रहा वो. एंड दे आर गिविंग एन एरर हेयर कि नेम टेम्परेचर तो डिफाइंड ही नहीं है बिकॉज कोई हमने इनपुट तो दिया ही नहीं है. इट इज शोइंग एन एरर. तो क्या प्रॉब्लम है इस प्रोग्राम में? इज देयर एनी प्रॉब्लम दैट यू कैन फाइंड इट आउट? We have not given any input regarding the temperature. So I have to give an input. Either I can use input statement also. I can give directly a temperature. Like temperature is equal to, suppose I said temperature is 35. So if temperature is greater than 25, it is hot outside. If it is less than 15, then it is cold outside and the weather is moderate. तो हमारा आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आना चाहिए? हॉट. ठीक है, हमारा आंसर आना चाहिए हॉट. यस, इट्स हॉट आउटसाइड. नाउ आई एम गिविंग अ वैल्यू बिटवीन 25 to 15. आप इसमें इनपुट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं. यू कैन टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर ऑल्सो. नाउ आई एम गिविंग 20. सो व्हाट विल बी द आंसर नाउ? टेल मी द आंसर क्विकली. It's between 25 and 15. 20. It will come cold or moderate. Quickly. Moderate. Let's check out. Yes, the weather is moderate. Fine. See one more example here. I have taken this example. Same example that we have discussed in
logical statement. I want to show you this program so that you can have a great idea or a best idea that how we are using logical operators here with if and else situation. अभी हमने जो सिचुएशन चेक करी थी यहाँ पर हमने सिर्फ एक एक कंडीशन चेक करी है, दो कंडीशन एक साथ चेक नहीं करी है. बट नाउ इन दिस एग्जाम्पल आई एम यूजिंग एंड लॉजिकल ऑपरेटर हेयर टू चेक. सो होमवर्क डन ट्रू, रूम क्लीन ट्रू. इफ होमवर्क डन एंड रूम क्लीन दोनों कंप्लीट होंगे, यू कैन वॉच टीवी. एल्स प्रिंट नो टीवी अंटिल टास्क आर डन. ठीक है, तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम. व्हाट यू विल गेट, सो यू कैन सी यू कैन वॉच टीवी क्योंकि दोनों ही कंडीशन ट्रू है. बट सपोज मैं ये रूम क्लीनिंग वाली को फॉल्स कर देती हूँ. नाउ व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द आउटपुट? No TV until tasks are done. Yes, no TV until tasks are done. And now if I'll change this operator from and to or, then what will be my output? You can watch TV. Yes, you can watch TV क्योंकि हम दोनों में और आ गया तो एक भी कंडीशन अगर ट्रू है, so the person can watch the TV. I hope the conditional statements are clear to you. यही conditional statements important होती हैं robots को train करने में. यही conditional statements जो आप कह रहे हो ना कि किस तरीके से robots की coding की जाए. This is the most important topic. This is the most important programming when you are programming any type of artificial intelligence. चैटबॉट्स को आप करते हो या रोबोट्स को करते हो या गूगल असिस्टेंट्स हैं, जिनको भी आप प्रोग्राम करते हो इसी ही बेस पर करते हैं. वहीं पर ये सारी इफ एल्स कंडीशन चलती हैं. इफ में आप डालते हो कि इफ द पर्सन इज आस्किंग टू प्ले अ सॉन्ग फ्रॉम 1920s or 60s, so they will have a long list of 1920 to 60s, so they will play the song according to that. If the person is saying to stop it और चुप हो जाओ और shut up, कुछ भी अगर इस तरीके के वर्ड्स, उनके पास मल्टीपल वर्ड्स होते हैं, दिस और करके प्रोग्रामिंग दी जाती है कि अगर आपको कोई भी वर्ड ऐसा सुनाई दे जाता है then you have to shut it down or you have to play an action. मल्टीपल वर्ड्स दिए जाते हैं, बैग ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं. So those all are done with the help of conditional statements. So congratulations that you have learned about the conditional statements, which is going to help you in coding the robots, the Google Assistants, and lots of other things which you can think of. Okay, so awesome job today. Very interactive class. We have covered logical thinking, how to accept user input, make decisions in Python. Keep practicing and don't forget to subscribe PF Education, because very soon we are going to upload our websites. On websites are all videos that we have learned in the StuCode 2025. Today we have a last session of this. We'll meet again next year with lots and lots of other technical softwares. Fine. So thank you very much. Have a nice day and have a nice year. Best of luck for your next year. Thank you very much. Goodbye.